Hello, friends. Hi. So, I'm here again, Dr. Shail Gupta, and today the topic is how to maximize the use of your donor area in hair transplantation. So, I'll be talking about some important facts which you should know if we are doing considering hair transplant as an option. This is important for those also who are considering hair transplantation for the first time, and it is also important for people uh, who have already got a transplant done, and now they either want to improve the what do you call, the thickness or density, or they want to target some new areas, or they want to you know correct the hairline, and obviously it is being done from your donor. So a hair transplant can be only as good as the donor. तो मैं दोनों भाषाओं में बात करूँगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डोनर एरिया के बारे में, कैसे आप मैक्सिमाइज़ करें अपने डोनर एरिया के इस्तेमाल को, क्योंकि ये एक लिमिटेड चीज़ है जो आपके पास होती है वहाँ पर, और आप उसको ओवर यूज़ नहीं, मतलब आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते, आपको उसको ढंग से इस्तेमाल करना होता है, लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। यहाँ से जब आप एक बार बाल निकाल लेते हैं तो दोबारा से वापस नहीं आएँगे। तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या टेक्निक यूज़ करना चाहिए, इस सब के बारे में हम अक्सर अपने वीडियोज़ में बात करते हैं, तो मैंने सोचा आज चलिए कुछ लाइव क्वेश्चंस लेते हैं इसके बारे में। तो आप कुछ भी जानना चाहते हैं, इफ यू वांट टू नो समथिंग, you can ask in the comment section. I'll be more than happy to answer that. And yeah, so as we know, we are born with a limited donor area at the back of our head. ओके, तो ये एरिया आपके पास लिमिटेड है। यहाँ पर हो सकता है ग्राफ्ट्स की संख्या जो आपके परमानेंट डोनर जोन में हो, वो सिर्फ हो सकता है वो आपकी 6,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो। मान लीजिए ये एक इतना बड़ा पट्टी जैसा सा चीज़ है यहाँ पर, इतना बड़ा, ये आपका डोनर ज़ोन है। अब अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि 5,000 के करीब ग्राफ्ट्स हैं इस परमानेंट डोनर ज़ोन में, मान लीजिए 6,000 है मान लीजिए। सो कैन यू टेक all of them out by FUE technique alone? Please listen carefully. Can you take all these grafts out by FUE technique alone? नहीं। क्या आप सारे बाल यहाँ से FUE टेक्निक से निकाल सकते हैं? सपोज आपका ये इतना बड़ा एक एरिया है जो आपका परमानेंट डोनर जोन है, इसके ऊपर और इसके नीचे ये जो चीज़ है, ये तो ऑब्वियसली आपका अनसेफ डोनर ज़ोन है। वहाँ से आप बाल नहीं निकालना चाहेंगे क्योंकि वो बाल बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टे नहीं करेंगे। बट अगर वहाँ से बाल निकालने ही हैं, तो आप FUT से निकालने के बाद अगर हमें ज़रूरत है, तो हम निकाल लेंगे। वो तो FUE से एडिशनल हम कभी भी कर सकते हैं। पर इस ज़ोन में से क्या आप सारे बाल FUE टेक्निक से निकाल सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पर मेरे 6,000 ग्राफ्ट्स हैं, क्या मैं सारे बाल निकाल सकता हूँ? मैं 1 आउट ऑफ 3 निकाल सकता हूँ। आई कैन टेक आउट 1 आउट ऑफ 3 फ्रॉम हियर। So that means I can take out around 2,000, maximum 2,500 grafts by FUE alone. But if I do FUT, I take a strip. Elasticity usually allows me to take out the strip 2 to 3 times. That means हम 3 बार तक FUT से अगर हम निकालें, एक स्ट्रिप में मैंने मान लीजिए मैंने 3,000 ग्राफ निकाले, दूसरी स्ट्रिप में मैंने 2,500 निकाले, और तीसरी स्ट्रिप में बचे हुए मैंने 1,500 ग्राफ निकाल लिए, तो मैंने लगभग पूरा 6,000-6,500 ग्राफ जितना यहाँ पर था। By doing 3 consecutive FUT techniques, I consume the entire area, I use all the donor in totality, and you still end up having a thin fine line because of trichophytic closure that is single. Just imagine what will happen if you take all these grafts out by FUE alone.
maybe in 10 sessions, 20 sessions. But can you take them out all like by just FUE? Is it possible? Please think. It is not possible because in FUE we are creating gaps. तो अगर हम यहाँ से सारा बाल जो ये 6000 के करीब ग्राफ्ट होगा परमानेंट जोन में, ये सारा तो हम निकाल ही नहीं सकते एफयूई से। अगर हम सारा एफयूई से निकालेंगे तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हम वहाँ पर कुछ गैप्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए यू विल हैव टू कंबाइन द टेक्निक्स। सो आई कॉल इट MHT, maximum harvest technique. This is a very unique concept which I have devised, maximum harvest technique. See, you will listen DHI, DHT, or best, or there are so many names, fancy names which have been given to FUE. And why is it being done? Because of marketing, to sell something which is same but to sell it in a different package so that you can sell it at a higher price or you can sell it amongst so many people. So आप सुनेंगे FUE के बहुत सारे फैंसी से नाम, DHI, DHT, बेस्ट और पता नहीं बहुत सारे नाम है। बट ये ज़रूरत क्यों पड़ती है ऐसे नाम बनाने की? क्योंकि बेचना है, क्योंकि कुछ अलग ऑफर करने को है नहीं। आप FUT के ऐसे नाम नहीं सुनेंगे, फैंसी से नाम। तो खैर कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। अभिनव सर, यू आर ओनली ट्रस्टेबल, कीप इट अप। या सी, हमारी कोशिश इन वीडियोस के जरिए या जो भी मैं बोलता हूँ ये होती है कि हम आप तक सच्चाई पहुंचा सके, एंड वो चीज़ें जो शायद कोई भी बात नहीं करेगा, जो बहुत लोगों के कमर्शियल इंटरेस्ट को डायरेक्ट हिट करेगी, पर वो बातें भी मैं बोलता हूँ। गुड इवनिंग मनीष। सेकेंड एफ सेशन लेना ठीक नहीं रहता। सेकेंड एफ अगर हम सेम डोनर से करते हैं तो मनीष उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। सेम डोनर से सेकेंड एफ नहीं करना चाहिए। आई हैव डिस्कस दिस मैनी टाइम्स that see, there is scarring. We all know that FUE is also causing scarring. It is not a scarless surgery. First of all, I have mentioned it in so many of my videos. I have shared in so many studies, so please go through it. If we do second FUE from the same donor area, there is high probability of dissecting, cutting the graft, and because there is a change in the angle of graft, and then that is a problem. So you end up dissecting, you end up transecting a lot of roots if you do second FUE from the same donor area. So it should not be done. However, in such cases where already one FUE has been done, FUT is always a better option. Now, सर फिनेस्टाइड कब तक लेनी चाहिए जिससे उसका साइड इफेक्ट ना हो? सी, ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता अक्षय। कुछ लोगों को फिनेस्टाइड लेने पर थोड़े ही समय में साइड इफेक्ट हो जाता है और कुछ लोगों को कई कई साल तक भी लेने पर साइड इफेक्ट नहीं होता। तो और आपको फिनेस्टाइड लेना ही पड़ेगा। जब एक बार आप शुरू करते हैं आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकेंगे if you start finasteride. So I always talk about this, that it is important, wise to think and to see whatever results you are observing, watching, whether they are because of the hair have grown because of finasteride or they are purely transplanted hair. At times it becomes difficult to differentiate between the two, and then you are in trouble because you might get inspired. You might see, oh my goodness, this is a great result, but the result actually might not be that great. And the moment this guy stops finasteride, he'll have rebound hair loss, and then you will actually see uh, whatever hair growth he had because of fit transplant. Sir, after a few change of angle of hair, please explain. See, uh, there is scarring underneath the skin. Suppose this is the skin level, and
This is the hair which was left there. ये बाल वहाँ बच गया था, which you are planning to extract now in second FUE. So because the punch is straight, see the punch is straight. So this angle, the angle of hair outside the skin, this is skin level. My finger is, this is skin level. So the angle outside the skin and the angle inside the skin has to be exactly same. If it is not same, suppose if it is, uh, I, suppose if it is like this, the angle there is same outside, but the inside angle changes. Suppose like this. Now, if I put a punch, I'll be dissecting this, transacting this root, and then this root is going to get destroyed, cut, and you cannot use it. तो जब आप यहाँ स्कारिंग होता है स्किन लेवल के नीचे, इस पोर्शन पे यहाँ स्कारिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है इसका एंगल चेंज हो जाएगा। और जब ये एंगल चेंज होगा, बाहर तो सेम है, अंदर से थोड़ा खींच गया, किस तरफ से खींच रहा है हमें ये भी नहीं मालूम, हो सकता है इस तरफ खींचे, हो सकता है इस तरफ खींचे, हो सकता है इस तरफ खींचे, जहां से ज्यादा आपने बाल निकाला उस तरफ वो खींच जाएगा हीलिंग में, और वो आपका ग्राफ्ट ट्रांजैक्ट होने का खतरा है। और अगर आपने निकाल भी लिया, इवन इफ यू are successfully taking them out, not transecting the roots, you are still creating more gaps, which obviously does not make any sense. See, uh, एक बहुत कॉमन बात है, कॉमन सेंस इज वेरी रेयर दीज डेज, पीपल डोंट यूज देयर कॉमन सेंस, डोंट यूज देयर ब्रेन्स. It is very simple mathematics that you have hair in this area and you want to place them here, but you are not using a technique which is mandatory, which will help you to take out hair from this portion and fill it up. But because you don't know it how to do it, then you are spreading lies about it. So that is why there are a lot of misconceptions. This FUE model, see, uh, I do a lot of FUEs. All the repair cases which I do, uh, they are like kind of almost donor is always gone. So we take out FUE from beard, we take out FUE from chest, we take out FUE from pubic area, from legs, from arms. Okay, so these are more challenging areas, difficult areas. We take out even the wrongly transplanted FUE grafts. I myself has done, see, this is FUE which I have done myself. So FUE is a wonderful technique and a very, very valued addition, but it is incomplete. To utilize your donor completely, you need combination of both the techniques. दोनों के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। आप अगर एक ही टेक्निक करना जानते हैं, आप ऐसे क्लिनिक पे जाते हैं जो सिर्फ एक ही टेक्निक करते हैं, तो फिर वो आपको कभी भी सही सलाह नहीं देंगे और आपको हमेशा अपनी प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप कितना डोनर यूज करना चाहते हैं अपना, आप देखेंगे देयर आर सो मेनी cases which I see there, they have gone for say 4,000, 5,000, 6,000 FUE. First of all, these numbers are not possible. These numbers are fake in most of the cases. And because the donor, Asian donor doesn't give that many by FUE alone. So many a times I see people doing FUT and saying, okay, we have done say 4,000 grafts. It is easy and they do it in one session and all. See, be smart, use your common sense, and save your donor for future. Even if you are getting it right for once, it is not enough, because that one right can spoil your chances for future. एक बार ही नहीं आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, हो सकता है आपको 2 बार कराना पड़े, हो सकता है आपको 3 बार कराना पड़े, हो सकता है आपको 4 बार कराना पड़े। तो आपको अपने डोनर को मैक्सिमाइज कैसे करना है यूज, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये आपको हर कोई समझाएगा भी नहीं। So if you are watching this video, you are lucky, you have just hit the jackpot if you are watching it for the first time. Okay, so हाँ ऋषि सिंह, आपने ट्रांसप्लांट करा है एफयूई से, बिल्कुल अब आप एफयूटी के लिए जा सकते हैं, आपको जाना ही एफयूटी के लिए चाहिए। यू शुड नॉट डू एफयूई अगेन फ्रॉम द सेम डोनर एरिया, एंड दिस इज अ मिस्टेक विच पीपल डू।
And I've seen people doing this mistake and then in fact prompting others also to do the same mistake. PRP minoxidil procapil is not working. What next? See, if in case PRP procapil minoxidil is not working, you can add finasteride after consulting your dermatologist, maybe, you know, uh, or then if the age factor and everything is okay, you can even opt for transplant. But you have to plan it, because if these medicines are not working, the treatment is not working, there is high probability that you get a transplant done. And uh, these hair will stay for some time, but then these hair can thin out, then these hair can miniaturize, and you are still, I mean, you are still losing your existing hair. That means a lot of gaps. So even the transplanted hair can thin out. 3 4 years back, I uh, introduced this concept. I, brought this truth in light, that even transplanted hair can thin out. At that time I was confronted. मैं जब ये 4 साल पहले ये बात बताया था कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी पतले हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो बहुत लोगों ने विरोध किया था, बोला था। बट अब आप देखेंगे तो काफ़ी सारे लोग, वही लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अ, अगर आप सच जानना चाहते हैं चीज़ों का, जो शायद आपको लोग बहुत समय के बाद मजबूरी में बताएं, वो आप जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए सत्या क्लिनिक से मेरे साथ। वो सारी चीज़ें आपको हम लोगों से बहुत समय पहले बता देंगे। हाउ मच विल इट कॉस्ट टू ट्रांसप्लांट माई फॉरहेड अप्रॉक्सीमेटली? Nityan D, hi. You can contact my team. The number is 9999570494. Team, please write the number in description, and the contact form link also in description. Please send the team, please. Uh, so on, my office is in Delhi. Sir, I have minimal thinning at frontal area. Doctor suggested me to finish trying PRP. Should I go for PRP only and wait for 6 months and give? Yeah, Umang, that makes sense actually. What I have seen, there is a mad race of showing results. एंड एक पुरानी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। तो एक पागलपन वाली रेस चल रही है जहाँ पर बस दिखाया जा रहा है, और आप शायद ये जानते भी नहीं कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो वास्तविकता में कितना सच है। आप भ्रमित हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं चीज़ों को, और उस भ्रम में आप डिसीजन ले सकते हैं, और फिर बाद में आपको हो सकता है उसके लिए पछताना पड़े। तो हाँ, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। वैसे आपके डॉक्टर बेस्ट जज हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते होंगे। बट फिर भी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि सबके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है आपके ऊपर जो आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं वही ज़्यादा बेहतर फिट होता हो। बट हाँ, प्लीज़ यूज़ योर कॉमन सेंस, और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप कुछ चीज़ों से डेफिनेटली बच सकते हैं। मुझे बहुत लोग कॉल करके बोलते हैं, दे कॉल मी अप एंड दे से, डॉक्टर वी जस्ट वॉच योर वीडियो, एंड बाय जस्ट वॉचिंग योर वीडियोस वी हैवंट मेट यू, बट वी एक्चुअली कुड चूज अ बेटर सोल्यूशन फॉर देमसेल्व्स। तो मैं यही बोलूँगा, ऑब्वियसली आप सब लोगों का मैं नहीं कर सकता हूँ ट्रीटमेंट, सब लोग मेरे पास आ जाएंगे तो मैं कैसे करूँगा। बट हाँ, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने लिए एक बेहतर और समझदारी से सॉल्यूशन तलाश सकते हैं। यू हैव टू प्लान योर hair journey. It is not just getting it once right. It is much more deeper than that, and you have to plan it, and you need a guide and mentor for this journey, who can guide you without his personal interests coming in picture. Okay. ब्रिजेश, आप क्लिनिक पे कॉल करिएगा, संडे तो क्लिनिक ऑफ रहता है। मनीष, मेरा आपने बहुत अच्छा, हाँ मनीष, आपका ट्रांसप्लांट बहुत अच्छा हुआ। हमें भी बड़ा मज़ा आया आपका ट्रांसप्लांट करके, और देखते हैं, अभी आपका रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही आएगा। और मिलते हैं आपसे एक बार 15 डेज वाले पीरियड में, जब हमें आपका ग्रोथ दिखने लगेगा, एंड इट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू लुक ऑसम।
Uh, Sukhvi Bandi, FUT, yeah, FUE. See, both the techniques are good. मैं आप ऐसे भी क्लिनिक से बचे हैं जो सिर्फ FUT करते हैं, आप ऐसे भी क्लिनिक से बचे जो सिर्फ FUE करते हैं। प्लीज़ आप बाद में किसी को भी चूज़ करें, पर एक बार आप अपनी असेसमेंट ज़रूर ऐसे क्लिनिक से लें जो दोनों टेक्निक्स में महारत हासिल है जिन्हें करने में। एंड दिस आई एम टेलिंग अगेन, सीन लॉट ऑफ पीपल कम टू मी recently. The recent video which we posted, that guy also, he said, the clinic said, we do both the surgeries, FUT as well as FUE, and for you FUE is going to be good, so we'll do FUE only. So at places you will be told complete lie, because they have been forced to tell this. But it is better if these guys learn the technique, master the technique of FUT, and then uh, you know think about patient also, and then take a decision on the basis of patients, keeping patients interest in mind. शंकर, आप प्लीज हमारे टीम को कांटेक्ट करिए. Rishi, you will get the address. Satya team, please send the address and other contact forms, etc., on the and contact number. Ankit, I'm taking finasteride 1.4 years, and my condition is like hair is not falling, not even one, but koi new hair nahi aaya. Can I shift to dutasteride? See, Ankit, dutasteride is a stronger medicine than finasteride, and I won't recommend you to shift to dutasteride, because in some time to come you may develop tolerance to finasteride, and then that would be the best time to shift to dutasteride. Till then, hold on it, and maybe you can reduce the dosage. I really don't recommend 1 mg per day to my patients. It is a very high dose. Even there are studies which say zero point 0.2 milligram of finasteride also works. Rana, in my 20 years of career, average life of transplanted hair. See, Mr. Rana, the average life of transplanted hair varies from person to person. And it is always relative. So let's take my case. See, I'm 45 years of age. I have done this transplant in the frontal area here, and I had slight recession of hairline, which was there like for so many years now, maybe more than a decade. So, and these hair over here, everything is good. So the transplant which I have done, the result is going to stay there for lifetime. I am not on any medication, no finasteride, no biotin, no minoxidil, nothing. I take facial PRP. So along with that, I take hair PRP also once in a year. And facial PRP is, by the way, the secret of my youthful looks. Okay, so I look young. You can see my skin. Um, so otherwise, now if you compare my result to, suppose, a guy who is 22 years of age and he is on medications and still losing hair, still the guy has progressed to grade 6, maybe in 3 to 4 years time, 3 years time, maybe sometimes just 2 years time. Now if I do a transplant in such young patient, there is probability that these transplanted hair will thin out at a very rapid pace. So one has to be very careful while doing transplant in younger patients. Very important to design a high hairline. And there is a concept which I follow in my patients. I sometimes I don't design a hairline for them. I If there is diffuse pattern of hair loss, I don't create a hairline. I just put grafts diffusely in between, because I don't want to commit a hairline for future. Then if we do a lot of grafting, it will obviously consume a lot of grafts there. And secondly, now
These are relatively stable. These hair are going to be there for a long period of time. Now, if the guy loses hair in these areas and has a band kind of hairline which I have created, it is going to look highly unnatural. So it has to be planned that way. Sometimes patients insist, but we don't have to. I'm there to mentor it. So I cannot um, uh, do everything which you want, and that is very important. That sometimes people see hair transplant is not just about getting hair back on your head. One has to see at what cost is it coming, and it is not just the monetary cost I'm talking about. It is a cost which you pay through your donor. It is not, there is not a never ending supply of donor at the back of your head. So please use your common sense. I always say, be wise, think twice. You are not doing it once. Be wise, think twice. Divya Vashish, you can please contact my team. Rohit Yadav. Okay, I'll make a video on alopecia areata and alopecia universalis. Yeah, that's a good topic. I'll make a video on that. Uh, Amir Hashim, by FUE is very good technique. That is why I've chosen this. See, please use your brain. There is something over here. I am not, saying that this technique is good, this is bad. Lot of things have been fed into your mind, and sometimes it becomes difficult. Somebody asked Hitler. किसी ने हिटलर से पूछा कि जर्मनी के लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं एंड यू नो बट आपके एक इशारे पे वो जान देने को तैयार है, तो आपने ऐसा क्या किया? तो हिटलर का जवाब था, मैंने एक ही झूठ को पचासों बार 100 बार बोला और वो सच बन गया लोगों के सामने। जब पचासों 100 लोग 1000 लोग एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं तो वो आपको सच लगने लगता है। ये प्रॉब्लम है ना? सो अगर एफ यू इज नॉट गुड, then why would I have chosen FUE for myself? It is a wonderful technique. There is no fight between FUE and FUT. The point is, you have some hair in this portion left, you want to use those hair, but you cannot use those hair because your surgeon does not know about FUT. धीरज, ओके, आप पहली बार देख रहे हो, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन? ओ हाय, हेलो सर, आई एम ब्रिजेश। ब्रिजेश, संडे ऑफ रहता है क्लिनिक। I'm 25 years old, taking finasteride from 2 years daily, 1 mg. My hair have become very healthy now. Should I minimize the dosage? I think, Shubham, yeah, you can do it on, like, shift it to alternate days. That would be better. Anurag, if your doctor has suggested you to take finasteride, maybe you can continue, but maybe just reduce the dosage. That would be good. Dama Raviraj. Uh, अब आपका खराब हो गया ट्रांसप्लांट एंड अब FUT से रिपेयर करवा सकता हूँ। See, you are just 23 years of age and you have a bad transplant with FUE. Then obviously the way to go is FUT. And sometimes in such cases, if the hairline is very low, वी टेक आउट दीज ग्राफ्ट्स। इन बालों को हम, खराब बालों को निकाल देते हैं, बजाय कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें खराब हेयर लाइन पे, हम उसको रीशेप करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो सेंड योर पिक्चर्स एट द गिवन नंबर्स एंड वी विल सी कि आपका कैसे ठीक किया जा सकता है ना? 9999570494, दैट्स द नंबर। Tanmay, you can contact the team again. Yes, online appointment is available. Uh, is it possible to not take finasteride for a 30 years old person? Will the trans?
See, auric transplanted hair will stay even without finasteride. In fact, only transplanted hair will stay without finasteride. All the non-transplanted hair, miniaturized hair, which were regrown by finasteride, if you stop finasteride, they'll go. So you'll actually come to know about the real transplant. Many a times people come to me and they say, "Doctor, we got a transplant done, and you know what? The result was good for 1 year, and then the result is going. Even the transplanted hair are going." So when I ask them, "Were you on any medication?" So they say, "Yeah, we were taking finasteride. We have stopped it now because the clinic said you have to take it for 1 year." So if your clinic is saying take medicine for 6 months, question them what will happen after 6 months if I stop it. If they say take it for 1 year, question them what will happen after 1 year if I stop this. Use your brain. Come on, use your brain. So many a times, what happens? People will show you grade 6, grade 7, and they'll show you wonderful results. By FUE alone, we did 5,000, we did 6,000. Now, if these patients stop taking finasteride, you'll actually come to know about the real transplant result. There are a lot of miniaturized hair which are present in those patients. Many a times you see pictures which have been taken after shaving off the head or trimming the hair, and it all misleads to the patient. अ, वो बेचारे पेशेंट जिनको नहीं पता, जिनको नहीं समझ, या जो इतना गहरा नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, उन्हें लगता है यार ये तो ट्रांसप्लांट से बाल आ गया है। वो अपने डोनर से ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं जो कि होना संभव होता ही नहीं है। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आए एंड ही सेड, "डॉक्टर आप तो कॉम्बिनेशन करते हो, एफयूटी से तो हर कोई 4000 ग्राफ्ट निकाल लेता है और एफयूई से तो 4000 सब कोई करते हैं। तो आप मेरे तो 8000 ग्राफ्ट कर दो, मेरा पूरा सर भर दो।" When I examined him, in his case, even with a combination of FUT and FUE, it was not possible to take out more than 2000 grafts. When I told him, he was shocked. He said, "Doctor, ये तो everyone does this. आप तो इतने अच्छे डॉक्टर हो, इतने बड़े डॉक्टर हो, आप नहीं कर पा रहे हो." So it was very hard, to explain him this. So please have realistic expectations. आप समझिए, ये दिमाग का इस्तेमाल कीजिए. वकील, आप अपना प्लीज पिक्चर्स भेजिए. हम थोड़ा सा बताएंगे आपको. वसीम, माय स्पेक्स आर लुकिंग गुड. या ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और ये मुझे मेरे एक पेशेंट ने गिफ्ट किए हैं. बॉम्बे से हैं वो पेशेंट, और नाम भी वसीम है, और बहुत अच्छे से बहुत प्यार से उन्होंने मुझे दिए. सी, दे आर रियली लुकिंग नाइस एंड रियली लव देम. The only thing you are doing advertising of your clinic, I really respect your concepts and theory, but the thing, we don't want FUT procedure because of moon sign-offs. See, Amir Hashim, uh, I think, see, I'm not advertising, obviously, and I'm not saying that you should go for FUT. FUE is a good option, but in case you run short of supplies, then you have to think about it also. Okay, so you have to think about it. There are so many big, big celebrities whom you see have undergone FUT surgery, not only in India, all across the globe. All across the globe. Hmm? Uh, they are not morons. Okay? They are not morons. So please, one question: does glue type patch with C22 damage existing hair? Yes, Ankit. Glue type patches obviously damage the existing hair. Yes, they do. ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट, कल्पना, आप वीडियोस देखिएगा सत्या क्लिनिक पे. बाय द वे, आप जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज जाएं, देखें. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस ओवर देयर वेयर वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इन डिटेल, इन डेप्थ. आप देखिए, 300 सवा 300 वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे.
ट्रांसप्लांट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, आपको पेन रह सकता है, नमनेस रह सकता है विच इज़ टेम्परेरी, कुछ समय में ठीक हो जाता है। और आपको वहाँ पर थोड़ा कभी-कभी सूडो फॉलिकुलाइटिस, कुछ दाना-वाना निकल आता है, ऐसा शायद मुझे भी यहाँ निकला था अभी इधर यहाँ पर। तो सूडो फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं इसको, ये शुरू के 4-5 महीना ट्रांसप्लांट के दिख सकता है आपको। और कभी-कभी कुछ लोगों में ग्राफ्ट एक्सेप्ट नहीं होते, ये भी साइड इफ़ेक्ट है। कभी-कभी कुछ लोगों में एक कंडीशन है, इश्केमिक नेक्रोसिस बोलते हैं उसको। मैंने अपने वीडियोज़ में दिखाया है वो। उसमें बहुत डैमेज हो जाता है आपका जो डोनर है, ब्लड सप्लाई कई बार लोकलाइज़्ड डैमेज हो जाती है, तो ये सब हो सकता है। हाउ मेनी सेशंस नोमान? ओके, व्हिच सेशंस नोमान? एफयूई, एफयूटी या फिर पीआरपी? Psychopath killer, your name is dangerous, man. uh, so, but you can, contact the team. They let you know. मेरे 1300 ग्राफ्ट्स लगे थे, 1300। Oh yeah, Bashir, you can do HT after COVID vaccine. uh, Beard, body hair can, it depends on the texture of hair in those areas. Sometimes we do a little bit of scalp hair in front. We generally see such cases who have very less donor left, and this is sometimes a big problem. So yeah, it can be used, but very carefully and strategically. I need to consult Satya team. Rajiv, yeah, the number is 9999570494. 9999570494. थिन हेयर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? लास्ट 2 ईयर से मुझे हेयर फॉल हो रहा है, 30 ईयर्स की एज में। आप कंसल्ट करें, अपनी पिक्चर्स वगैरह भेजें रोहित, या अपने आसपास किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। QHT, what is QHT technique? How to save your current hairline until I get ready for transplant financially? This is first time here, sir. Uh, uh, See, a good healthy diet, which includes seeds like pumpkin, chia seeds, flax seeds, um, berries, nuts. That is really good source of protein. Like in case you are non-vegetarian, you can have chicken breast, you can have some meat, you can have eggs also, and good amount of fruits and vegetables also. You should consume seasonal fruits and vegetables. Overeating is also harmful. Stay away from high glycemic index food, that is also not good. Mm. And then be positive, stay positive. You can save your hair. Sometimes patients are just scared, they think that they are going to lose hair. They have family history of baldness. At times they don't they see their father and they get scared. Oh, I'm gonna be bald like him. See, please, there are so many treatment options available these days, and even the bald look does not look bad. It is the way, the confidence with which you can carry it. Please don't keep blaming baldness for all the debacles in your life, all the problems in your life. At times, people do this also. Please stay away from that. Be happy with whatever you have. And yeah, obviously, transplant is something which can improve upon your looks, but hair is not everything. Or up, Jamin, you can also do some affirmations, and this is for all, obviously. You can do some affirmations
and sleep hypnosis that really helps. Yeah, I'm a subconscious healer and life coach also. So I make meditations. They are on my channel, this which is a different channel from this one. That is by my name, Dr. Shail Gupta. You can go and search the channel and go through the videos. They are like wonderful, and they'll really help you. ये क्वेश्चन हम विराट डिस्कस कर चुके हैं। दवाई लेनी पड़ती है अगर हम दे रहे हैं, शुरू करते हैं तो। पर अगर हम शुरू नहीं करते हैं दवा को, तो हो सकता है कि बहुत लोगों का काम बिना दवा के भी चल जाए। धीरेन्द्र, या प्लीज यू कैन कम कॉन्टेक्ट माई टीम। धीरेन्द्र गौतम, यस यू कैन कम। Numbing cream, Prolox, Prilox, then Numbex. There are many names. You know these numbing creams you can use. Adinath, Vishal, you can contact my team, please. Yeah, you can contact me then. Sir, how can I book a consultation with you? Himanshu, you can contact my team. You know, they and book an appointment with me. Neha, hi Neha. देखो धीरज, आपको मैं फिर बोलूँगा, बहुत सारे क्लिनिक्स आपको रिजल्ट शो करते हैं, पर आप ये नहीं समझते कि ये रिजल्ट किस कॉस्ट पे आते हैं। जब आप FUE यूज़ करते हो सभी पेशेंट्स में 3,000 4,000, तो उस स्थिति में आपने अपने सारे मल्टीग्राफ्ट का खजाना खाली कर दिया है। आपने बहुत सारे ग्राफ्ट अनसेफ डोनर ज़ोन से निकाल लिए हैं, और आपने यदि इन सब पेशेंट्स को फिनेस्ट्राइड खिलाया है, तो ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। आप देखिएगा, मैं अभी डाले हुए केसेस आप देखिएगा, बहुत सारे ऐसे केसेस जिनके अंदर मैं फिनेस्ट्राइड देता हूँ, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट जो आप 4-4 हज़ार ग्राफ्ट पे देख रहे हैं, वो 1800-1900 ग्राफ्ट में आपको दिख जाएंगे, और वो भी सिर्फ FUT पे। तो रिजल्ट कितना अच्छा है वास्तविकता में, और किस कीमत पर आ रहा है, और इन सबको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके देखिए। देखिए उन चीज़ों को। आप अपना सारा डोनर कंज्यूम कर कर यदि एक बार बैठ गए हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कई बार सिर्फ चीज़ें, अगर मैं भी ये जानता हूँ, मैं अपने जितने पेशेंट्स को, सब पेशेंट्स को यदि फिनेस्ट्राइड खिलाऊँ, तो जो मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, उस रिजल्ट से कम दुगना या 3 गुना डेंस आपको रिजल्ट दिखेगा। आप इन्हीं रिजल्ट्स पे जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, देखिए कि ट्रांसप्लांटेड एरिया कितना है, और बाल जब पोस्ट ट्रांसप्लांट आप देखते हैं तो कहाँ-कहाँ उगे हुए हैं। तो जब नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी फिनेस्ट्राइड इतने बाल उगा सकती है, तो ट्रांसप्लांटेड एरिया में भी कंट्रीब्यूट कर रही है डेफिनेटली। तो उसको थोड़ा-सा समझ के देखना पड़ेगा। चेक फॉर मिनॉक्सिडिल इज़ गुड प्रतीक। FUE, नो, आप FUE से एक सेशन उस डोनर एरिया से जब आपने निकाला, इट डिपेंड्स कि कितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपने निकाले हैं। अगर आपने एक ही थोड़ा एरिया यूज किया और ये अनटेस्ट है, तो आप ऑब्वियसली दोबारा FUE करा लीजिए अनटेस्ट एरिया से, है ना। मैक्सिमम ग्राफ्ट एक अच्छे डोनर से FUT प्लस FUE से कितना निकाल सकते हैं? सी, आई कॉल दिस टेक्निक MHT, मैक्सिमम हार्वेस्ट टेक्निक। एंड एफर्ट लगता है इसमें, ये हम जनरली 2 दिन में करते हैं इस काम को, अगर हम 4-5 हज़ार ग्राफ्ट के लिए जा रहे हैं तो। और अगर हम एक थोड़ा नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स के लिए जा रहे हैं, तो फिर ये 1 दिन में भी किया जा सकता है। नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स, देखो FUT और FUE कंबाइन करने पे भी अच्छे डोनर में 4-4,500 ग्राफ्ट, या बहुत ही अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5,000। वो भी कॉम्बिनेशन जिसमें एक मेजर चंक ग्राफ्ट FUT से आ रहा है, जो कि आप मतलब 4,000 यूजली वो नंबर रहता है जो हम कॉम्बिनेशन पे निकाल पाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 4-4,500 जिनका अच्छा डोनर है, और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जिनमें ये नंबर 2,000 भी क्रॉस नहीं करता। तो ये थोड़ा सा देखना और समझना पड़ेगा आपको। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे और सिर्फ भावनाओं में बह जाएंगे, तो फिर आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। Sir, is it safe going for HT in COVID era? See, we take precautions, Amit, but actually, see, nothing is safe in COVID era.
I am 20 and having a slight beginning male pattern alopecia, like my temples are a bit thinning, but still maybe are present. Uh, See, you should consult a dermatologist near your place, Mohit, and just see. I mean, minoxidil can prove to be a good option, but sometimes you don't need minoxidil for slight recession of hairline, and we can just, I mean, we may just skip doing it, and maybe we can do well with some polypeptide preparations or procapil also in such cases, maybe some vitamins and just lifestyle changes. See, there are so many fancy names have been given to hair transplant techniques now, and many a times these things are just marketing gimmicks. QHT, I don't know, I don't have any idea about this. Ravi, I've answered your question. Youth India, you can contact my team. See, there is a level of involvement uh, when people come to me for surgery, and my team will guide you about my level of involvement in the surgery. That is one of the reasons why I have not opened multi-city branches, because then that can compromise with the quality of results which we deliver to our patients. So my personal involvement is there with my patients. Grade 6 baldness, Narendra, don't give it a second thought. It is always a combination of FUT and FUE. Please stay away from people who say only FUE. Please, please, please use this. Anurag, see, doctor is like a mentor, and everything has to be planned. You know, before FUE, before this FUE came into picture, there was only FUT surgery, and this was not, hair transplant clinics were not mushrooming like this, the way they have been doing today. Lot of clinics are running a business model where they have franchisees, where they hire technicians, get the surgery done, and sometimes they hire some doctors also who are not actually even medical doctors. I came to know about some people who were hiring a Hindi PhD and some doctor, and they were getting the transplant done. Sometimes, I mean, see, please do your research. Do your research. See the level of involvement of doctor in your cases. That's very important. 3 महीने के बाद काजी आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं. Oh, I think the session has gone too long, 48 minutes. So let me just wind it up. मुस्टैच कम है तो फिनेस्ट्राइड लेने का कोई फायदा नहीं है, धीरज. Vikas, please consider dermatologist near you. Uh, Jamin, see, there is a good shampoo which we have made, which is SLS and paraben free. This is like Satya's own shampoo, and this is quite good. I personally use it for my hair, and I have to wash my head daily. Because I have itching problem on the scalp if I don't wash it. So actually, I devised it for myself, but now it is good, and I tried it in some of my patients. They were very happy. So we have this. Maybe it will be available online also very soon, and we have a very good supplement also that you can take. That is hair art. Okay, Ruchi, hi. So uh,
Okay, so mostly, you know, uh, I think it's time we wind up, like we have exceeded our limit. Okay, so any further questions which are left, you can ask my team. You can go through the description form which is there in link. You can contact the team. The number is 9999570494, and you can also visit the website which is hairtransplantIndia.co.in. And in case you want to know something about me, I know a lot of people follow me, and they get inspired uh, by things what I do. So you can follow me on. You can see my website. This is www.drshailgupta.com. You can also follow me on my YouTube channel, Dr. Shail Gupta, and I'm also available on Instagram and Facebook. So you can follow my personal things which I do. And this life is short, and life is amazing, life is beautiful, and we all are blessed to be in human body. And I think we should make the maximum out of this life. We should love ourselves enough. We should not dislike ourselves or hate ourselves. Sometimes we do. I have seen this journey, I have been through all this, so I can really understand the concerns and pains of my patients. But yes, uh, again, life is wonderful. Please enjoy and make the fullest out of it, and make sure that you bring smile to somebody's face, and be happy and make people around you happy. Love yourself. Stay blessed. Thank you so much.